Hello, good morning everyone. So today here we are with the last day of coordinate geometry topic. This day will be in two parts. First one I'll be completing the HOTS question, that is 26 and 27. The last two questions I'll be discussing in this video. And the next will be all the answers I'm sending in form of a PDF. So what you're going to do, of course you're going to watch this video, and then you will complete 26 and 27 question, and then you are going to verify all your answers from the PDF. So that's it, the topic will be finished. So from tomorrow we can begin with a new topic. But keep in mind, keep this in mind, that at any cost you're going to verify all the answers, because there can be mistakes in your work. Because when I was going through all your questions, one thing I found, that you all are doing well, you all have done everything properly, but there are some errors in identifying quadrilaterals, there are some errors in plotting the points. It's not mistakes, these are errors. So when we have errors, that means our concepts are clear, but due to speed, due to maybe some kind of distraction, we make some mistakes, some errors, and that we can cover easily just by knowing that this should not be done in this way. Okay, so know the concept, know the correct answers, and get the things done as better as possible. So let us start the video with the HOTS question of question number 26 and question number 27. The two questions only we have to discuss. Now let's start understanding. Here the triangle PQR is an equilateral triangle. So ये जो three sides say, that is QR, PQ and PR are equal. Now there are few students, those who could say the answer is 0, 4 because it is on y axis, and 1, 2, 3 and 4th in the table. But let me tell you, it is wrongly printed there. This is not possible, let me tell you. So you yourself can understand, if this is the side, you can understand that this is 4 unit, you can check 1, 2, 3, 4, right? Now as it is an equilateral triangle, even this is 4, ये भी 4 unit होगा, even this is going to be 4 unit. So do you think it is possible that this is also going to be 4 unit? Isn't it? It is impossible. So ये जो है ये completely wrong है. So I'll just erase that. It is not the correct answer. ठीक है? So then what is the correct answer? Let us see how to find out. To find out the coordinate of P, it's very clear the x coordinate will be 0 and y coordinate will be y. As I have already said, a point on y axis is always going to be 0, y, and point on x axis is going to be x, 0. It's very clear, right? So it is a point on y axis. If it is a point on y axis, it is going to be 0, y. If this is going to be 0, y, this distance is going to be equal to y. है ना? The point, if it is 0, y, ये जो distance होगा PO is equals to y. Okay. OQ कितना होना चाहिए according to you? OQ will be equal to 2 because it is 2 unit, you can check here. And PQ is already, I know that it is 4 because it is an equilateral triangle, right? I can use Pythagoras theorem in this triangle. So in triangle POQ, I can use Pythagoras theorem. क्या होता है Pythagoras theorem? PQ square is equals to PO square plus OQ square. Remember, Pythagoras theorem is extremely important theorem for your geometry. If you don't know to use this properly, then geometry is going to be very, very difficult for you. ठीक है? So let us see. PQ square, that is 4 square, is equals to PO square, that is y square, plus OQ square, that is 2 square. So it is 16 is equals to y square plus 4. 4 can shift here. It is going to be 12 is equals to y square. So what is y is equals to? Root 12. Which you can easily convert into mixed surd. Maybe that is 2 root 3. ठीक है ना? तो y is 2 root 3, that's it. तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा? 0, 2 root 3. अभी आपको लग रहा होगा कि एक बहुत वियर्ड नंबर आ रहा है, बहुत वियर्ड आंसर आ रहा है, बट दैट्स हाउ द मैथमेटिक्स इज. सो डोंट कंसिडर इट इज अ वियर्ड वन, rather it is a correct one. Okay, so anyhow it's okay, there is no issue. However, you get your answer as in irrational number or something. Okay, so no problem, and here is the correct answer. ठीक है? Clear? This is easier than the previous one, don't worry. Okay.
So in this case, I am supposed to find out A. That means coordinate of A. This is the question number 27. In question number 27, I have to find out coordinate of A. A find करना मतलब 3 तो already I know. Only A if I find, my answer is done. Okay, I have to find just the value of A, the small a. Small a. So once I get the small a, I can easily find out the coordinates of point A, right? So let's understand. First of all, what I know, I'm going to use it. मतलब area of triangle OAB is equals to area of triangle OPQ. मतलब ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया है. इफ एरिया इज इक्वल, आई विल जस्ट राइट डाउन व्हाट इज एरिया. एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस है ओ क्यू इंटू हाइट है पी क्यू. ओके ओके, उल्टा हो गया क्या, सॉरी सॉरी, जस्ट ओ ए बी के लिए हाफ इंटू बेस इज ओ बी इंटू हाइट इज ए बी, बराबर है ना. एंड ओ पी क्यू, इन टर्म्स ऑफ ओ पी क्यू, हाफ इंटू बेस इज ओ क्यू into PQ, right? Half and half is getting cancelled. Abhi if I find OB, AB, OQ, PQ, then I can easily get the answer for A. So let us find out all these values. पहले OB is nothing but your इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट. होप यू अंडरस्टैंड, है ना. ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ऐसे होता है ना, राइट? समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक जितना होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक जितना होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट. यू नो दैट वेरी वेल. तो यहाँ से यहाँ तक जितना है वो होगा x कोऑर्डिनेट. कितना होना चाहिए, वो 3 है. तो ओ बी विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए बी मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, वो कितना होता है, y कोऑर्डिनेट होता है. तो y कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, a प्लस 1. तो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना या नहीं आ रहा है. ओ क्यू, यहाँ पर भी वही चीज़ है. जस्ट मिनट, हाँ, गिव मी सम टाइम बिकॉज लेट इट ओपन. ये गया. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो ओ क्यू मतलब देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये रहा, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक होता है, तो दैट इज -2. लेकिन आंसर में तो -2 यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ओ क्यू इज अ साइड है, तो वो हो जाएगा 2. ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है. एंड पी क्यू कितना होना चाहिए देख लो, इट इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू 6. हो गया मेरा आंसर. a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 3. सो इट इज गोइंग टू बी a प्लस 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4. 3 टू 6, 2 टू 4. तो a विल बी इक्वल टू 3. देयरफॉर a कोऑर्डिनेट इज 3,4. दैट्स इट. आइडिया क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इंटरेस्टिंग था, इजंट इट? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था. आपको बस ये कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए. देख लो, इमेजिन करो, ये अगर मेरा कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है ये होता है a, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है वो होता है b. दैट यू हैव टू नो. ओके, उसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये कंप्लीट क्वेश्चन था. ठीक है, डन. हाँ, एंड नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट वन शुड अंडरस्टैंड इज नथिंग बट साइड नेवर कैन बी नेगेटिव. देयरफॉर ये जो 2 है जो नेगेटिव था, इंस्टेड ऑफ दैट आई टुक इट पॉजिटिव. So these are the two basic and important thing that what we learned in this particular HOTS question. So let me tell you, HOTS question that means higher order thinking skill question, जिसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं, कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं, एंड दैट वी हैव टू ग्रैब at the same moment. Okay, so that we can be, we can able to solve any of such category question and we can crack it out. ठीक है, तो that's it for today. We'll stop this work here, and then I'm sending answers to you today in the form of a PDF. So आपको 2 काम करने हैं आज, ये तो 2 कंप्लीट करने हैं, and then answers of the PDF you have to verify so that your all answers are correct and you are good, or your topic that is coordinate geometry is done. Okay, so that is in your pocket to give you scores. Okay, so let's put this topic that is coordinate geometry in our pocket today at any cost. Okay, so thank you so much. See you tomorrow. Bye bye.